अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, इस डिवाइस का नाम है Realme C33 Realme C33 2023. Released 2023, the 14th of March, 187 gram, 8.3mm thickness, Android 12, Realme UI, S64GB, 128GB storage, micro SAN 6.5, 720 times 1600 pixels, 50 MP, 1080p, 4GB RAM, Unisoc Tiger T612, 5000 mAh leap network technology, GSM, HSPA, LTE launch announced 2023, the 14th of March, status available. Release 2023, the 14th of March, BODY dimensions 164.2 times 75.7 times 83mm, 6.46 times 298x03, 3 in, weight 187 grams, 6.60 ounces, build glass front, plastic frame, plastic back, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, display type IPS LCD, 400 nits, type, size 6.5 inches, 102.0 square centimeter, approximately 82.1% screen to body ratio, resolution 720 times 1600 pixels, 29 ratio, approximately 270 ppi density, platform OS Android 12, Realme UIS chipset Unisoc Tiger T612, 12 nm, CPU Octa-Core, 2 times 1.8 GHz Cortex-A75 and 6 times 1.8 GHz Cortex-A55, GPU Mali-G57 MEMORY card slot, micro dedicated slot, internal 64GB, 4GB RAM, 128GB, 4GB RAM, UFS 2.2 main camera, dual 50 MP wide, PDAF 0.3 MP, f2.8 depth. Features LED flash, HDR, panorama video, 1080p 830 fps selfie camera, single 5 MP, f2.2, 27mm wide, 15.0, 1.12 m. Features HDR video, 720p 830 fps sound, loudspeaker, yes, 3.5mm jack, yes, comms, WLAN, Wi-Fi 802.11 bits, G, N, Bluetooth 5.0, a 2 dp LE, positioning GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NFC, no radio, unspecified, USB micros 2.0. Features sensors, fingerprint, side-mounted accelerometer, proximity battery type, LiPo 5000 mAh, non-removable charging, 10W wired, MISC colors, sandy gold, aqua blue, night sea, price about 110 EUR. अब हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को और 3D इमेज को डिटेल में देखते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन को, कैसी स्पेसिफिकेशन दी गई है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। स्क्रीन साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया इसमें, 6.5 इंच स्क्रीन साइज़ दिया गया इसमें। जो पिक्सल है 720 मल्टीप्लाई बाई 1600 पिक्सल इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे इस डिवाइस में हमें। और इसकी जो स्क्रीन बॉडी रेशियो है वो काफ़ी अच्छी दी गई इसमें, लेकिन आपको जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी इसमें। और आपको इसमें कलर कम्बिनेशन भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और आगे बात करें कैमरे की, तो कैमरा काफ़ी अच्छा देगा इसमें 50 मेगापिक्सल का, लेकिन आपको इतनी अच्छी इससे पिक्चर्स का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इस फ़ोन की जो पिक्सल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं दी गए इसमें। आपको लाइट मोड में थोड़ी सी अच्छी पिक्चर्स मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप डार्क साइड पे जाके पिक्चर्स बनाते हैं आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी कलर कम्बिनेशन में डार्कनेस आएगी और इतने क्लियर कलर्स आपको नहीं मिलेंगे पिक्चर्स में देखने को। और बात करें रैम की, तो रैम में भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया गया, इसमें 4GB रैम दी गई। और जो इसमें चिपसेट लगा हुआ वो भी इतना लेटेस्ट चिपसेट नहीं लगा हुआ, जो आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस पर काफ़ी असरअंदाज होगा और आपकी फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी स्लो होगी इससे। और 4GB रैम से आपको इतनी अच्छी स्पीड भी नहीं मिल सकती। अगर आप इस फ़ोन से गेमिंग करना चाहें तो आप इतनी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते इस फ़ोन से। आपको इसमें थोड़ा सा स्पीड स्लो मिलेगी और जो गेमिंग के ग्राफिक्स जो हैं वो भी इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बैटरी के लिहाज से देखा जाए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो इसकी बैटरी साइज़ है 5000 mAh की बैटरी लगाया गया है इसमें।
और बैटरी साइज जो काफ़ी अच्छा लगाया गया है इसमें। आप अगर इस फ़ोन से गेमिंग करते हैं तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल सकता है। और अगर बात करें इसमें जो स्टोरेज की, तो जो 2 स्टोरेज में अवेलेबल है मार्केट में, 64 GB 128 GB स्टोरेज। इसके साथ आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो एंड्रॉयड आता है 12 एंड्रॉयड आता है, Realme UI आता है इसमें। और अगर इसके वेट की बात करें तो 187G वेट है इसका। और जो इसकी थिकनेस है 8.3 mm, काफ़ी स्लिम फ़ोन है और लाइट वेटेड फ़ोन है ये, और काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन है। अगर आप देखें तो इसके साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। और इसके साथ जो केबल आती है 2.0 OTG केबल मिल गई आपको। इसके साथ जो चार्जर मिलेगा 10 वाट का चार्जर मिलेगा, जिससे आपको फ़ोन की चार्जिंग काफ़ी टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में इससे। और देखें तो काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन बनाया गया है। इसमें जो बैक साइड पे कैमरा पुट किया काफ़ी स्टाइलिश अंदाज में किया गया, और साथ में LED फ्लैश भी दी गई है। बैक साइड पे Realme की ब्रांडिंग भी की गई है। और बात करें इसमें कलर जो अवेलेबल है, ये 4-5 कलर्स में मार्केट में अवेलेबल है, यूनिक कलर्स में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गैजेट टेक रिव्यूज़ को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।